Whether you are a small or a medium business owner, you must be aware of your intellectual property rights. What are the other legal obligations one must know as a business owner? In this episode, we are going to talk about that. So stay tuned. Hello, everyone. Welcome to the brand new episode of our business podcast, The Business Queens. Today, we have Miss Manvi Rajvanshy on the show, who's the co founder of Juris Law Offices. Manvi, thank you so much for being here, and we welcome you to today's show. Thank you so much, Ishleen. I'm very happy to be with you. My pleasure indeed. My pleasure indeed. So, Manvi, tell us something about this Juris Law Firm and how did you come up with the idea of establishing it? So, Ishleen, we started it in 2011, later months of 2010 and earlier months of 2011. And there was no such wild guesses, even that we will gonna establish a law firm. This was thoroughly a coincidence, and me and now my husband, and at that time we were best friends. So we were preparing for this judicial services, and we were also looking for internships side by side. And within months, we knew that we have to establish a law firm instead of practicing as a junior with somebody. Let's take our own experiences. So I am from the civil side. Basically, he is very good with criminal matters. So that's how we thought that acha chalo, let's start it, and then we take it forward. Okay. That's indeed a great initiative, but because being a beginner, most of the people choose to work under somebody, gain experience, and then start their own journey as an entrepreneur. It is indeed a powerful step that you have taken, and we wish you all the very best for your future. Thank you so much. Thanks so much. Okay, so tell us something more about your law firm. Like, what kind of services do you provide? Ishleen, we are a national level law firm, and we, from the very inception, when we started our law firm, from the day one, we were very clear that we don't want to hodgepodge it, right? So from day one, we have individual departments, separate matters. For example, if there will be civil matters, so it's not like that. There will be a lawyer who is from the criminal matters background, and he will jump into the civil matters. So from day one, we were very clear about it that we have to segregate the departments, and we'll work like that. So from the very beginning of 2011, we had civil department, we had criminal department, we had a separate department for constitutional matters also. Okay. And from there and then only we also have this arbitration, contracts and everything. So corporate department is segregated and the criminal department is also segregated. Okay. So as you take care of the corporate department as well, tell us what are the different kind of legal formalities and legal obligations that small and medium business owners must take into consideration when they're starting their own business. Ishleen, in today's world, for example, if I talk about 2023, the foremost and most important aspect for corporates, even for SMEs, is to protect their brand, right? I believe that all the SMEs have their chartered accountants with them who advise them, like doctors, right? Right. But I will say here that where looking on to the current matters on my table, as I look into the corporate matters myself. So brand protection is the major chunk where SMEs are lagging behind. They need to protect their brand, and they should understand. They should understand why it is important, what all measures they can take. For example, let's talk about what is the name of your brand, Ishleen, if I may ask, or you are working with your own name. You yourself are a brand. I have my own consultancy. The name of the Apex Learning. Apex Learning. Apex Learnings. So, for example, Apex Learning is, and it was started in which year?
It was started 2 years back. 2 years back, let's say 2021. Right. Yeah. So Apex Learning, let's say down the lane, 5 years or so, will be a huge success the way you are going, right? And let's say there is somebody based in Delhi with the same name, but they have established their brand in 2023, but they have already taken the trademark, right? Or some kind of literature which has been copyrighted, right? So after 2 years or 3 years, when you are an established brand on your peak, but you have not taken the trademark or the essential things which you were supposed to have, he can come or she can come and can ask you, this is my trademark and you cannot work in the name of Apex Learnings. So this is the brand protection. Right. The way brand protection is like taking care of your money. So again, the brand identity and with the means by which you are pursuing your businesses. Consider that again like a money intention. Right. And I think this is something that everybody must take into consideration, and people are still not very aware of it. Like most of them think that once it will reach a certain point, then we are going to get into this. And they ignore this aspect right in the beginning. This is very important. Okay, can you add on something related to intellectual property rights as well? Intellectual property rights is like a premises, right? Trademark, copyright, patents, getting your designs registered and everything. They are the separate independent rooms in that. So basically right now we just talked about trademark. So trademark is a part of, integral part of intellectual property rights. So intellectual property rights cover three main dimensions. Number one is again trademark. Second is designs or copyright. And the third is patents, right? So if you have innovated something, for example, some kind of design, some kind of chemical formulation, right? Something new which was not there earlier. So we go for patents. Okay. Right? Copyright is there are two things, right? In copyright, number one is if you have certain kind of literature, right? So that is part A. And if you have certain designs, for example, a shoe or a sole or a jewelry, right? Right. For that also we take copyright. So for that we get our designs registered, and in return of that we get a certificate in the name of copyright. Okay. And trademark is getting your name registered. Yeah. So recently I was talking to one of a women entrepreneur who is a designer, because you talked about jewelry. So that instance came to my mind. She is a jewelry designer and she designs her own jewelry. So what she does is she basically sells her designs to different, big organizations like big jewelry makers. I won't be taking the names, but there are many, that we are aware of. So what happened was many a time she had shared the designs and she was told, no, we don't like your designs. And later on, she comes to know that the same designs they have already made the jewelry using that. So I think this is one thing which can really help her out. That is the main thing. This is the kind of example I just with your permission I had just shared with you. Brand name like that. If her designs would have been registered, this wouldn't have been the problem. She would have given a certain time period license to them, है ना, कि अच्छा ये लाइसेंस है, आप इतने टाइम से इतने टाइम तक आप, फॉर एग्जांपल तनिष्क ने उनका डिजाइन्स ले लिए, राइट? तो शी वुड हैव आस्क्ड देम कि मैं आपको मेरे डिजाइन्स को यूज करने का जो लाइसेंस है वो इतने से इतने टाइम पे दे रही हूँ, आपका एक्सक्लूसिविटी होगा नहीं होगा, there are lengthy agreements behind that. In this case, I think the awareness is lacking. Somehow people are not aware of it. And second thing is the same, like people feel that we don't need it right now. We are just starting. Let's just establish ourselves and then we'll get in. But they get into exploitation because of that. Ishleen, rather I will say well begun is half done. I always say this. Starting is the point. Starting is that juncture of time where you can incorporate as many technicalities, formalities, which are necessary for your business. Because see, once you are settled, once Apex Learning is settled,
you already have like 100 or 200 clients, and then suddenly after 2-3 years you will ask, "Arey, now I want to get into all the legalities. You have to sign the agreements, etc., etc." At that juncture of time, people or your clients might not be willing to do that. Right. But day one, when you have started your Apex learning, and at that juncture of time, you are asking somebody, "Oh, these all are my legal formalities. My legal department take care of all these XXX." You have to do it, and it's very simple. If you want to get associated with us. Great. So I And believe when somewhere people start any new business, one thing is they are not aware of it, and many of them, they are just taking legal advice from people, but they don't have their own legal department. So what are the different kind of things you suggest small and medium business entrepreneurs should keep in mind while they are entering into agreement with their vendors, suppliers, and other people? Ishleen, before we jump onto the agreements of certain things, I'll just share a couple of things. Even if you are starting your business as a proprietor, money, you are not making a separate independent organization to run your business, etc. And you are starting it solo, no partners, no company formation, nothing. Right. Then also, if you are starting your business with your own name, for example, let's say instead of Apex Learnings, you would have opted to start as Ishleen Kaur XYZ, right? Then also I will suggest that there are certain things, for example, MSME, right? Taking MSME certificate, I will always suggest that take it. Irrespective, if you are starting something commercial, take it. It just, I think there is 150 rupees or something is the government fees for that. And so you will be a preferential, I'll say preferential debtor or something like that, or creditor, कि आपका market पे पैसा रुकेगा, तो you will be given preferential rights कि आप अपना पैसा recover कर सकते हैं. Second, government is working very hard and very smart for MSMEs, right? अगर मार्केट में आपका कहीं पैसा रुक रहा है या कोई डिस्प्यूट हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है समाधान पोर्टल करके, ठीक है? वहां पे आप एज एन इंडिविजुअल भी खुद जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी सुनवाई होगी, ठीक है? सो नंबर 1 इज टेकिंग MSME. अगर आपका बिजनेस GST के अंदर आ रहा है तो आप GST और उसकी कंप्लायंसेस पूरी कीजिए. Again, foremost, very important with a star is get your brand registered. Protect your brand value from the day one. आजकल ट्रेडमार्क मिलने में भी अप्रोक्सीमेटली 2 साल का टाइम लग जाता है. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं. ऑलमोस्ट जो लोग अब मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये आइडिया है कि हमें अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्ट्री के पास एप्लीकेशंस भी बहुत रहती हैं. लेकिन बिना ये सोचे कि यार ये क्यों पहले सेटल हो जाए और फिर कर लेंगे, डे 1 से करना चाहिए. नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगेन ये सारे पैरेलल एस्पेक्ट्स. आप किसी के साथ भी एग्रीमेंट में जा रहे हैं, आपका क्लाइंट हो, जैसे हम ड्राई क्लीनिंग पे जाते हैं, ड्राई क्लीनिंग की एक पर्ची मिलती है, राइट? उसके पीछे कितना कुछ लिखा रहता है. हमने शायद कभी वो पढ़ने का ध्यान नहीं दिया. बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, वो इतना बड़ा फॉर्म देते हैं, उसपे कितना कुछ लिखा होता है, बस बैंक वाला बता देता है यहाँ साइन कर दीजिए. उसी तरीके से बिना डरे, बिना झिझके, बिना ये सोचे कि भाई जब होगा तब देखेंगे, है ना, प्रिकॉशनरी मोड में डे 1 से चलना चाहिए. मान के ही चलना चाहिए कि भाई आप मार्केट में उतरे हो, आपका पैसा, आपका काम, आपका प्रोजेक्ट डूबने के लिए उतरा है. तब ये सोच के उतरेंगे तो फिर सक्सेस मिलती मिलती चली जाएगी. तो जिससे भी आप अपने एग्रीमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ईमेल पे अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि भाई आर्किटेक्ट फॉर एग्जाम्पल है, वो कहते हैं कि यार अगर हम इतना लेंथी एग्रीमेंट किसी के पास लेके जाएंगे तो साइन ही नहीं करेगा कोई. कोई बात नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं. आप ईमेल के अंदर डिस्क्लेमर लिखिए, ठीक है? आपके जो परचेज ऑर्डर्स हैं वेंडर्स के साथ में, आप जिससे सामान ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके साथ भी तो आपको कुछ होता होगा. परचेज ऑर्डर्स के ऊपर अपनी टर्म्स क्लियर करके चलिए. ईमेल डिस्क्लेमर होगा. इनवॉइसेस होते हैं, उसके ऊपर कुछ सर्टेन टर्म्स होती हैं, वो आप क्लियर करके चलिए. तो ऐसा नहीं है कि आपको 80 पेज का कोई एग्रीमेंट बना के किसी के सामने रखना है, साइन करवाना है, बट कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन वो होनी ही चाहिए. And you have raised a very important point. जो email disclaimer वाला है, I think 2 to 3 years back,
I was giving a training session in one of a very big corporate. Us time पर they were somewhere around 1,000 crore company, and I told them about email disclaimer. They were not aware of it, and I was like, मतलब इतना big organization and they are not aware of this fact that how can a small disclaimer protect them? So I told them to put it right away. So these are the small things that one has to keep in mind. Again, it is a very valid point कि इतना बड़ा agreement is not required. Email is also a legal proof. If somebody has reverted to your email, accepted the contract, it is a legal proof. You don't have to get it, go and visit the person and get it signed. And abhi to, being online, there are so many things that are happening by email only. Like you get the contract on the email, you sign it and send the scanned copy. So nobody comes to visit you. So this is really very important. That is a very good point. Thank you so much, Manvi, for taking up that. Okay, Manvi, tell us one more thing. Like small and medium business owners, most of them, they don't have their legal departments in place. So what are the basic things they must keep in mind so that they don't get into any kind of legal issues and anything? Ishleen, आई बिलीव आप हम एक बार जैसे हम लोग जैसे बात करें, देखो मैं एक ना बहुत सिंपल सा एक आप ये कह लो कि वो कहते हैं ना कि कैच, देयर इज अ कैच। देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप उत्तराखंड में है ना, मैं दिल्ली के अंदर, लीगल डिस्प्यूट बिना ये सोचे कि आप देहरादून में हो या आप दिल्ली में हो या आप मुंबई में हो, वो आएगा। आप कितनी छोटी से छोटी जगह हो या बड़ी से बड़ी जगह हो, जिस दिन आना है वहां पे गड़बड़ हो सकती है। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरा लीगल डिपार्टमेंट नहीं है, यानी कि लीगल डिपार्टमेंट जैसे कि 5-7 लोगों की कोई टीम है या उससे भी ज्यादा लोगों की कोई टीम आप इन हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरीके की जिनके पास लीगल डिपार्टमेंट नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, देखो अगर आप किसी भी एक लॉयर को हायर करोगे या किसी एक पैरालीगल को आप हायर कर लोगे जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज को देखता रहे, तब आप उसकी एक एवरेज सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होगी आज 2023 में? एटलीस्ट 25 इवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तब भी कितना पे करना पड़ेगा? 25 to 30 तो आप करोगे ही ना। 25 to 30 आप करोगे। तो आप कुछ कोशिश कीजिए कि आप जिस भी एरिया में हैं, जो ऐसा बंच ऑफ ग्रुप है जैसे लॉ फर्म्स है, कॉर्पोरेट इस तरीके की जो फर्म्स है, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं जो ये इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो आपको एक इन हाउस फैसिलिटी देंगी। दे चार्ज सम, देखो 15,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक भी जाते हैं। आप 15,000 रुपए से शुरू करके आप जहां पे आप सिर्फ एक एम्प्लॉय रखोगे, वहां पे आपको पूरी लीगल लॉ फर्म की फैसिलिटीज मिलती हैं। लॉ फर्म इन द सेंस कि 4-5 मतलब जहां पे भी कुछ ग्रुप ऑफ लॉयर्स काम कर रहे होंगे, वो आपको एक ऐसा बंदा देंगे जो आपके ऑफिस में आएंगे, ठीक है, आपका सारा स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके हिसाब से डे टू डे आपका काम करेंगे। फिर वो चेक बाउंस के केसेस हों, क्योंकि आपने देखा होगा पोस्ट डेटेड चेक आजकल बिजनेसेस के अंदर आम चीज है, बिजनेस ऐसे ही होता है, राइट? तो आप उतने से भी अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे विदाउट बीइंग सीन डिसरिस्पेक्टफुल टू एनी प्रोफेशन। आई विल से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ना कंपनी फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज के अंदर ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई जीएसटी मिल गया, रिटर्न फाइल हो गई, है ना, सेल्स टैक्स, वैट और ये सब का काम हो गया, ये अलग चीजें हैं। लेकिन लॉयर की जो सर्विसेज होती हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। अब मैं अपने ऑफिस में ये कहती हूँ कि भाई आप अपना काम शुरू कर रहे हो, आप जिसकी भी हेल्प चाहिए आप लीजिए, लेकिन एक बार किसी अच्छे लॉयर से गो थ्रू जरूर करवा लीजिए, राइट? चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो आपके कोई एग्रीमेंट्स हो, चाहे वो आपकी कोई कंप्लायंसेस हो, चाहे वो आपके डिजाइन्स हो, वो एक बार जरूर ओपिनियन ले लेना चाहिए। और जैसा कि आपका जो क्वेश्चन था कि वो लोग क्या कर सकते हैं, तो या तो वो डिपार्टमेंट की तरफ चल सकते हैं, लेकिन डे 1 अगर वो नहीं हो रहा तो वो किसी भी एक अच्छी लॉ फर्म से बात करके और नेगोशिएट करके दे कैन वर्क ऑन दैट कि हमें ये सर्विस, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हम ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे। डे 1 पे तो कोई अमरचंद मंगलदास नहीं जा सकता है, राइट? लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम डे 1 से सोचते हैं। राइट, राइट।
सो दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस मानवी। अच्छा मानवी, एक चीज हम लोगों को और बताइए, तो अगर हम लोग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लाइक दे वांट टू स्केल देयर बिजनेस, सो उसके लिए दे गेट इनटू मर्जर्स, एक्विजिशंस, और अगर बहुत छोटे लेवल पे बात करूं तो they get into collaborations, partnerships, joint ventures. So what are the things they must keep in mind that can legally protect them? मतलब उन लोगों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे जाना चाहिए? What are the clauses they have to keep in mind? What are the basic things they have to keep in mind? इसलिए देखिए, हम यहाँ पे इंस्टाग्राम को एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। इंस्टाग्राम स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे होम ग्रोन ब्रांड्स ऐसे आए, ठीक है, जिन्होंने मार्केट में धमाका कर दिया। राइट। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने के साथ साथ शुरू हो गई प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक मैन्युफैक्चरर, अब मैं स्मॉल स्केल हूँ, मीडियम स्केल हूँ, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नेशन के लिए, ठीक है। सेकंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लॉयल कस्टमर्स के लिए जिन्होंने हमें आज जहां हमें वहां तक पहुंचाया है, ठीक है। और थर्ड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी टीम के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि तो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, अब तो खैर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी जापान से, चाइना से, कोरिया से, यहाँ से बहुत सामान आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देख लेनी चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके से वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी में मैं एनवायरमेंटल पॉलिसीज को मान के चलती हूँ, ही इंक्लूड कर, ठीक है। सेकेंड इज आपका अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो वहां पे आप इस चीज को उस तरीके को सर्टेन डिस्क्लेमर्स, कुछ प्रोडक्ट के लिए लिटरेचर, प्रोडक्ट के लिए नॉलेज, हम यहाँ पे जब आप टीम एक्सपैंड करते हो, so you should be very focused and very clear with all of your policies, be it HR policy, be it labor code, ठीक है, be it posh policy। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखते चलना चाहिए। राइट। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पॉश पॉलिसी, उसके बारे में मैंने देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी ऐसी हैं हु आर नॉट फॉलोइंग इट स्ट्रिक्टली, एंड उसके लिए क्या होता है, लाइक पीपल फील कि नहीं अभी बड़ी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम लोगों ने पॉश के लिए वी गेट आवर विमेन एम्प्लॉयज अवेयरनेस अगर हो जाता है, उन्हें पता लग जाता है, तो उससे ना कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। सो आई हैव सीन कि ये एक मिथ है बिजनेस ओनर्स के माइंड में कि अगर हम अवेयर कर देंगे ना तो लोग कंप्लेन करने के लिए सामने आ जाएंगे। अभी उनको लगता है कि मतलब वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म, सो थ्रो सम लाइट ऑन दैट सो दैट पीपल गेट अवेयर अबाउट दैट एज वेल। देखो यार, इसका मैं ना बिल्कुल सिंपल सा एक जवाब दूंगी, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ये पूछिए कि आपको क्या चाहिए। आपको ये चाहिए कि आपकी एम्प्लॉय आके आपको कंप्लेंट करे या आपकी एम्प्लॉय जाके पुलिस को कंप्लेंट करे। आप अपने डोर स्टेप पे अपने एम्प्लॉय को केटर करना चाहेंगे या फिर पुलिस को? देखो, पॉश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव, एंड आई बिलीव इज ऑल्सो मॉरल ड्यूटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लीगल के साथ साथ। और पर डे इसमें फाइन बहुत हेफ्टी है, इट स्टार्ट फ्रॉम 5,000 रुपीज अगर आप उसकी कंप्लायंस जो भी होनी चाहिए वो नहीं करते। अभी रिसेंटली मई में ही सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई है जिसपे उन्होंने कह दिया कि भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे पॉश पे काम नहीं हो रहा है, राइट। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई आप जो भी कंप्लायंसेस अब आपके पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस पर डालिए, आपके नोटिस बोर्ड पे लगा होना चाहिए कि पॉश की आपकी आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आपकी बनी हुई है और कौन लोग उसके मेंबर्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये ना हम सिर्फ लिथार्जिक होकर चीजों को डिले करने का एक जरिया हमें चाहिए होता है जो हम इन बहानों के पीछे ढूंढ लेते हैं। मतलब मैं तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ कि आप अपने एम्प्लॉय को केटर करना चाहोगे या पुलिस को? सिंपल। आपकी रेपुटेशन कितनी खराब होती है कि आपका कोई ऑफिसर और उसके बाद 4 पुलिस वाले और एक फीमेल पुलिस वाली मैम कोई आगे खड़ी हुई है और किसी भी तरीके की बातचीत हो रही है, तब उससे बेटर तो ये है ना कि हम अपने ऑफिस में ही करें। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, अगर इंटरनल रहता है तो उससे आपकी रेपुटेशन भी खराब नहीं होती है। एंड कहीं ना कहीं अगेन दिस इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, इफ विमेन आर कमिंग टू वर्क इन एनी वर्क प्लेस तो उनकी सेफ्टी जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कहीं ना कहीं। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। Okay, so I have also read about you, Manvi, that you also have one women entrepreneur foundation
Tell us something more about that. Ishleen, Women Entrepreneurs Foundation is one of my passionate project. I am very, I will not say that I'm feminist. Also, if I say, there is no harm in saying that. But in today's world, na, feminism की definition ही बदल गई है. Right. So, Women Entrepreneurs Foundation, we started it in 2017 और floor पे आते आते 2019 हो गया. So, this is basically a organization where my individual intent is that to maintain a balance in the society for men as well as women. Right? So we cater all the professionals, all the business owners who are working or who took sabbatical but now they want to work. So we try and generate business for them. एक चीज पे हम लोग रहते हैं कि भाई आपको बिजनेस करना है. हाँ, we are pro women but that doesn't make us anti men, right? तो हम ये कहते हैं कि हम हर किसी का बिजनेस प्रमोट करेंगे, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ठीक है, लेकिन हम बिजनेस जो प्रमोट किसी के फेस के थ्रू करेंगे वो फीमेल का चेहरा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल काउंटर पार्ट आते हैं और वो बोलते हैं कि जी मुझे अपना बिजनेस प्रमोट करवाना है या आपका इंटीग्रल पार्ट बनना है, तो हम उनसे सीधा कहते हैं ठीक है, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी डॉटर, आपकी सिस्टर, whosoever is the active part in the business, they can come forward और हम उनके थ्रू आपका बिजनेस प्रमोट करेंगे. सिंपल. ठीक है. Okay, so tell us one more thing. Like you talked about this that you are promoting women business. So do you also have any community or anything that people can come and join to get their business promoted? Yes, Ishleen, we are working pan India. So there are inner circles, right? For example, we have inner circles where weekly meetings take place and all the females and all the members meet every week and they tell about themselves, basically 60 seconds or 90 seconds of spotlight. They just introduce themselves और उसके बाद वो अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं, बिजनेस एक्सचेंज करते हैं बेसिकली. उसके अलावा हमारी एक ई मैगजीन है पैन इंडिया, हम लोग वर्क करते हैं इन द नेम ऑफ द वी टुडे. अगेन रजिस्टर्ड ब्रांड, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फाउंडेशन इज आल्सो रजिस्टर्ड. ठीक है. उसके अलावा वी आल्सो हैव सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अलग अलग कॉलेजेस के साथ हम लोगों का टाई अप है. तो उनके अंदर हम लोगों ने वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट सेंटर्स डेवलप किए हैं. उसी के साथ हम लोग रिसर्च पे भी काम कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो फर्स्ट रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई थी वो थी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ओके, राइट. तो इस तरीके के जो सोशल इश्यूज हैं उनसे भी हम उनको एज एन अपॉर्चुनिटी हम कैसे देख सकते हैं. और अभी रिसेंटली एक हो गया थोड़ा टाइम, बट हम लोग एक और चीज अभी शुरू करना चाह रहे हैं, वी बुक क्लब. तो जहाँ पे कि अलग अलग तरीके की कुछ बुक्स हैं, कुछ सेशंस हैं, कोई ऑथर कोई अगर आके इंट्रोड्यूस होना चाह रहा है, कोई क्लास अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग बस बहुत जल्दी करेंगे. इसके हम लोगों के बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम्स भी होते हैं, जहाँ पे जो एक प्रॉपर सेट रहता है उस पर क्या आप कर सकते हो, बिजनेस स्केल कैसे कर सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट, all the things. So we just try and contribute something. And Manvi, I feel so proud and I feel so motivated after listening to so many things that you have planned for women. And when you said कि मैं एक feminist हूँ, so I would also say I'm also a feminist. I don't know, I'm not against men at any sort, but still कहीं ना कहीं वो रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि women are still somehow they are neglected in our society. मतलब हम ऊपर लेवल पे जितना मर्जी बोल लें there is equality, but still वो वाली जेंडर इक्वालिटी अभी भी नहीं आई है. लाइक इफ मैं मेट्रोज की बात करूं, इट इज स्टिल देयर, बट स्टिल इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल टाउन, स्मॉल प्लेसेस, women still not come up in front. There is something that is stopping them. So what is one message you would like to give to all the women audience who are listening to us today? I might sound harsh on this aspect, Ishleen, but it is a game of choice. I am what my what my past choices were. I am the reflection of that today. Right. So yes, there are certain हम सबको एक लाठी से तो नहीं हाँक सकते, सच है ये, राइट. लेकिन फिर भी 99% ऑफ केसेस के अंदर आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं वो हमारी चॉइसेस की वजह से है. देखो, ईव टीजिंग आज भी है. आप सीखो ना सेल्फ डिफेंस. आपका पंच एक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के मुंह पे पड़े तो एक बार तो उसकी तारे, वो जो पिक्चर्स के हम देखते हैं, वो आपको कोई नहीं रुकेगा.
आज के दिन में कोई पिता अपनी बेटी को नहीं रोकेंगे कि तुम सेल्फ डिफेंस मत सीखो, राइट? आज अगर मुझे जॉब करनी है और मैं ये बोलूंगी पापा पहले मुझे आईफोन लेके दीजिए, उसके बाद में जॉब देखूंगी, या फिर जिस एलीट की ना भी हम बात करें, अगर हम छोटे लेवल पे भी बात करें, आपको पहले हर समय में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको पहले अपने आप को प्रूव करके तो दिखाना ही पड़ता है। राइट। मैं ये बोलूंगी कि देखिए, मुश्किल सबके लिए है। आज के हमारे प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल नहीं आती होंगी, ठीक है, या फिर ऑपोजिशन लीडर के लिए क्या मुश्किलें नहीं आती होंगी? क्या एक आईएएस आईपीएस के लिए आज के दिन मुश्किल नहीं आती होगी? क्या एक माँ के लिए जिसको सुबह 5 बजे उठ के अपने बच्चे को स्कूल तैयार करके भेजना है, अगर बच्चे ना हो तो वो क्यों 5 बजे उठेंगी? तो मुश्किलें हैं, बस उनको देखने का नजरिया है, आई बिलीव। तो आई बिलीव कि हमें अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको ओवरबर्डन नहीं करना है। बेचारे ऐसे ना, मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा फील होता है कि उनको हमने इतना ओवरबर्डन कर दिया है, ज्यादा हो जाएगा, राइट? राइट। सो इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस यू मेक, राइट। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड मैसेज, वेरी पावरफुल मैसेज कि कुछ भी लाइफ में बहुत इजीली नहीं आता. For anything or everything you want in life, you have to work. So with this, Manvi, we have come to the end of today's episode. Thank you so much for taking out your time and giving the powerful message to our audience. Thank you so much, Ishleen, and I would request you on air here that let's connect and do something. If you are such a powerful personality, if you are willing to take it forward, you are most welcome. Thank you so much for your time. That would be my pleasure indeed.